हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। फ्रेंड्स, चैनल जदि नुआ अच्छ तो सब्सक्राइब करी निश्चित रूपे बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो सब लाइव अपलोडेड वीडियोज पई। हमर जहाँ चली ओडिशा एजुकेशन सर्विस मिशन को फेस करवा केमिति क्वालिफाई करवा तापाई ओईएस रो सिलेबस को कवर करने को चेष्टा करवा ता सहित ये इंपोर्टेंट एमएड और बीएड स्टूडेंट्स मानक पई। सो आज डिस्कशन एजुकेशनल फिलोसफी रे जीन जोसेक्स रोसो। सो स्टार्ट करने पूर्व निश्चित रूपे फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर दियो, कमेंट करके निश्चय जनइब केमती रहा सेशन एंड चैनल नुआ तो निश्चित जॉइन कर जाओ एंड लाइक करने को भूलनी वीडियो को। सो फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जे जो मैंने भी वर्तमान पर्यंत आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना से एक्सप्लोरिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल रे निश्चय रूपे जॉइन कर एंड जॉइन करने लिंक डिस्क्रिप्शन रही। तो स्टार्ट करवा आज इंपोर्टेंट वीडियो को जोटी आम फोकस करवा रोसोंकर एजुकेशनल फिलोसफी। 1712 रे जन्म, 1778 रे मृत्यु, फ्रेंच रो नागरिक। ऑक्युपेशन फिलोसोफर, सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट, म्यूजिशियन, बटनिस्ट, राइटर। फिलोसॉफिकल एजुकेशनल स्कूल ऑफ थॉट होची नेचुरलिज्म। फादर ऑफ नेचुरलिज्म मध्य कहा जाए रोसो को, जीन जोसेफ रोसो। ओके, रोसो वाज naturalist. His philosophy emerged as a reaction against the contemporary social and political setup. He wrote against the artificiality, coercion and cruelty during these times. His philosophy concepts of natural state, natural man and natural civilization. तो ये important किसी information मु provide करी एंड जोटा इंपोर्टेंट लगे निश्चित रूपे नोट करनब जहाँ द्वारा राइटिंग प्रैक्टिस हम जेहेतु आमर ओईएस रे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आसो एंड कंटेम्परारी वेस्टर्न फिलोसोफर मानकर फिलोसफी एजुकेशनल फिलोसफी निश्चित रूपे आसो। तो नेचुरल मैन को इंपोर्टेंस देइछंती, नेचुरल सिविलाइजेशन को एंड नेचुरल स्टेट को इंपोर्टेंस देइछंती। नेचुरल स्टेट मीन्स द सिंपल फ्रेमिंग कम्युनिटी और स्टेट विदाउट एविल्स, करप्शन एंड सोशल क्लासेस। तो एमती आमर नेचुरल स्टेट जोटा सी कहते नेचुरल स्टेट रे एविल्स नथिबो बा कोनोसी प्रकार क्राइम्स नथिबो, करप्शन नथिबो एवं सोशल क्लासेस नथिबो जा द्वारा डिविजन होथिबो मनुष्य भितर बा समाज रे डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स भितर। नेचुरल मैन मीन्स मैन इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय लॉज ऑफ हिज ओन नेचर रादर देन दोज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो मैन इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय ओन नेचर, निज अनुसार निज हिसाब रे बंची पारुथिवार फ्रीडम ताकू मिली पारिबो सोसाइटी रे। कौन सी प्रकार सोशल इंस्ट्रक्शन, सोशल लॉ रूल ता उपरे इंपैक्ट पकेवा कथा नुह, इंपोज हवा कथा नुह, ताकू बाध्य करवा कथा नुह कौन सी जिनस करबा पाई। सिविलाइज्ड मैन बोर्न लिव्स एंड डाइड इन स्टेट ऑफ slavery. Rosso man middles with them and they become evils. So friends, रोसोंकर इम्पोर्टेंट जो कथा थिला मीन्स नेचर क्रिएट एवरीथिंग गुड, मैन मिडल्स एंड एवरीथिंग बिकम एविल. He believed that man would have been happier if he had been allowed to remain in his natural stage. तो नेचुरल स्टेज रे जदि रहिबा पई ताकू अलाउ कर दिया जिवो ताहले मैन निश्चित रूपे खुशी रे रही पारिबो. रोसो हैज रिमार्क्ड दैट लिव द चाइल्ड अलोन, चाइल्ड को एकुटिया छाड़ी दवा दरकार. लेट हिम ए नेचुरल मैन रादर देन ए सिविलाइज्ड मैन. तेणु कहारी दास न होई कि जेहेतु सी कहले सिविलाइज्ड मैन जन्म हुए, बंचे एवं जीवनटा को बीते दिए, दास है कि अन्यर दास है. तेणु ये नेचुरल मैन को आम कौन करवा, लेट हिम ए नेचुरल मैन रादर देन ए सिविलाइज्ड मैन. लेट हिम हैव ए स्टेट ऑफ नेचुरल रादर देन आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स दैट स्टंट द प्रॉपर ग्रोथ एंड अरेस्ट हिज नेचुरल डेवलपमेंट. तो प्रॉपर ग्रोथ हवा को दबनी आउ नेचुरल डेवलपमेंट हवा को दबनी जदि आम ताकू सिविलाइज्ड मैन करवा. किंतु जदि नेचुरल मैन करवा सी फ्रीली हैप्पीली बंची पारिबो. नेचुरल सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स एंड बैरियर्स दैट पोल्यूट द गुडनेस ऑफ आवर नेचर. रिटर्न टू नेचुरल मीन्स रिटर्न टू नेचर, गो बैक टू नेचर वाज द मेथड टू क्योर ऑल ट्रबल्स. तो सबू ट्रबल को क्योर करबा पई गोटे उपाय नेचुरलिस्ट
फिलोसोफर रसो देइथिले सेटा होची गो बैक टू नेचर, रिटर्न टू नेचर and you will be trouble free. Human nature, that is his natural heritage, is essentially good and it must be given the fullest opportunity for free development. तो free development पाई human nature जेहेतु natural automatic आसी थाए तो तारो good development fullest development पाई हमें ताकू freedom दवा दरकार. In the social contract, he was stated that man is born free, but everywhere he is in chains. तो ये जो जिनस गुड़ा तांकर वर्ड्स ओरिजिनल वर्ड्स ताको निश्चित रूपे आम हाइलाइट करके लिखा दरकार. ओएस रो क्वेश्चन आंसर केवल एमती गप लिखिदेले हेनी, समस्ते तो यहाँ जानी समस्ते गुड़ाए आड़ू सियाड़ू कर लिखे जेहेतु आम क्वालिफाई करार अच्छे तेणु आमको टू द पॉइंट जावाक पड़ो. तो मोस्टली हाइलाइटेड करने को पड़ो किसी statements given by Rosso, like man is born free but everywhere he is in chains. He believed that children should be educated in nature and according to nature far from the madding crowd. तो ये क्राउड रू सोसाइटी रू ये जो से कही जे सिविलाइज्ड मैन ये सब किसी दरकार नहीं, आमको फार अवे जावाक पड़ो टू द नेचर एंड हवा को पड़ो कौन सिविलाइज्ड नुहे हैप्पियर मैन, नेचुरल मैन, राइट. ये सब वर्ड्स को इंपोर्टेंस दबा. रिटर्न टू नेचर ये सब जिन को इंपोर्टेंस दबा. एंड देन दे बिकम करप्ट इन हिज टाउन्स इन व्हिच दे लिव विथ अडल्ट्स. ही वाज चैंपियन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन. ही बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. नेक्स्ट चला रोसो admired the simplicity and purity of nature. Nature is pure and simple. He stated that God makes all things good, man meddles with them and they become evil. A words गुड़ा दरकार, a statement गुड़ा दरकार लिखिवा. He declared that everything is good as it comes from the hands of the author of nature. Author of nature means related to God, the creator. Okay, but everything degenerates in the hand of man. So everything is good as it comes from the hands of the author of the nature. बट आम हाथ में पड़गले से कौन हो डिजेनेरेट कर तार क्वालिटी डिक्रीज कर व्हिच इज ए फैक्ट. रसंकर नेचुरलिज्म रे एम ऑफ एजुकेशन कौन अकॉर्डिंग टू रोसो फॉलोइंग एम्स शुड बी ऑफ एजुकेशन. सो फॉलोइंग एम्स शुड बी टेकन केयर इन एजुकेशन. कौन से सब टू डेवलप इंडिविजुअलिटी, टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल सक्सेसफुली, to self-expression, to achieve social progress, to secure present and past happiness, to develop efficiency and performance and perfection of human machine. The human machine रो performance और efficiency को develop करिवा, human को machine हवा को दबानी. To secure adjustment with environment, जे कौन से environment सहित adjust करिवा. and ता सहित point number 8, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सब्लिमेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स ए सब उपरे इंपोर्टेंस दउछि रसंकर नेचुरल स्कूल ऑफ एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट वाला मेथड्स ऑफ टीचिंग. Rosso has suggested the following methods of teaching, like example is better than perception, real life सहित कनेक्ट करिबा. Social knowledge should be imparted through social participation. इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन. प्रति इंडिविजुअल को इंपोर्टेंस दवा दरकार. एंड ओरिजिनल वे जेहेतु आम जानी इंडिविजुअल डिफरेंस, सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन एज पर देयर नीड. ह्यूरिस्टिक मेथड शुड बी अप्लाइड, मीन्स डिस्कवरी एंड लर्निंग बाय डूइंग. रियल लाइफ सहित कनेक्ट करवा एजुकेशन को. ता सहित डायरेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी गिवन, मीन्स स्टडी टूर. ओके, स्टडी टूर हूँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस एग्जांपल. and ता सहित लर्निंग बाय डूइंग मेथड शुड बी अप्लाइड. सो ये सब मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट रोसो. नेक्स्ट देखा जो डिसिप्लिन, रोसो हैज एम्फासाइज्ड ऑन द फ्री एंड नेचुरल डिसिप्लिन. ही हैज रेज्ड द स्लोगन लिव द चाइल्ड फ्री. तो एमती किसी वर्ड्स को हाइलाइट करवा जदिव मुझे रेड रे करछि, बट डू नॉट यूज रेड इन योर एग्जाम रे रेड को यूज करवा कथा न, बिकॉज ये रेड कलर
ता सहित कनेक्टेड कलर लाइक ऑरेंज जोटा कौचे पिंक कौचे आम कौचे ये तो अलग कलर रेड नुहे वी कैन यूज नो वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस कलर्स एंड पर्टिकुलरली गोटे कलर को ही यूज कले बेटर लीव द चाइल्ड फ्री बट हाइलाइट करें आम वर्ड्स को ओके एंड हाइलाइट मीन्स अंडरलाइन करें इन्वर्टेड कमा भर लिखिपर सो दैट इजिली विजिबल हम एंड देयर शुड बी absence of restraint from Emil कौन जो राइटिंग बा ऑथर ऑफ एमिल हूँ बुक रोसंकर जोठी फिलोसफी नेचुरलिस्ट फिलोसफी विषय रे लिखा जाइए he also advocated that discipline by natural consequences he remarked allow the child to explore the natural result of his acts for example if the child puts his hand into fire let him burn his hand and learn by consequences तो ताको आगरू कही दबानी जे सेठी हाथ मारना हाथ जली जीव let him allow करिबा ताको allow the child to explore the nature and nature को explore कला बेले जदि से फायर रे हाथ दउची let him burn his hand ता हाथ जळू आ जळिले ही से जानि परिबो तार consequences हिसाब रे सो सबु जिंस को निजे फील करू leave the child free no punishment should be given to the children for improving his behavior because the child fails to understand the cause of punishment child को punishment केबे भी दबानी कारण से punishment रो कारण जानी पारेनी एवं ताको wrongly नहीं जाए that's why no punishment should given to the child role of teacher कौन according to Rosso said that teacher should protect the child from mental conflict repression and mental disorders of all kinds he believed that teacher should not interfere with the activities of the children the interfere kariba katha nuhe should not interfere with the activities of the children means child को freely छाड़िबा तार कोनोसी activities रे interfere करिवानी माने teacher centric नुहे रोसंकर philosophy the teacher's duty is that he should see that education of the students is the free development of their interests and motives जहाँ child रो interest अछि जहाँ child रो motives अछि सी फ्रीली से अनुसार डेभलप कर कौन प्रकार इम्पोज बा बाध्य करवानी कौन जिनस Rosso has not given the higher place to teacher को higher place दे नथिले not given the higher place to teacher Rosso's ideas about education are mainly expounded in Emil the writing the book which was written by Rosso in that work he advances the idea of negative education नेगेटिव एजुकेशन विषय रे मध्य नेगेटिव एजुकेशन को मध्य इंपोर्टेंस देइथिले Rosso which is a form of child centered education नेगेटिव एजुकेशन जहाँ को Rosso इंपोर्टेंस देइथिले केवल एंड Rosso को हिसाब रे when the child is left free to develop his body and senses से ता द्वारा ही डेवलप करि पारे एंड नेगेटिव एजुकेशन विषय रे कहिथिले तो ये पॉइंट को मध्य आम हाइलाइट करिपरिबा ओके पॉजिटिव एजुकेशन एम्ड टू रिप्रेस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड पॉजिटिव एजुकेशन आम कौन कहबा तार नेचुरल जो वेटा लर्निंग रो ताको रिप्रेस करि दिए किंतु नेगेटिव एजुकेशन कौन ताको आम फ्रीडम दबा जेमती आम एग्जांपल गोटे देले जे हाथटा नियारे रखिबो एंड सेटु जळी गला परे हाथ को निजे फील कला परे तार कन्सिक्वेंसेस रु से सिखिबो दैट इज नेगेटिव एजुकेशन व्हिच इज ए फॉर्म ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जोटा कि गोटे टाइप रो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाइल्ड को बेसी हमें फ्रीडम देइछे हिज एसेंशियल idea is that education should be carried out so far as possible in harmony with the development of the child's natural capacity by a process of apparently autonomous discovery तो ताको autonomously discover करबा को दबा तारो natural capacities को explore करबा को दबा means child को तारो गोल बा डिफरेंट सिचुएशंस लाइफ को एक्सप्लोर करी नॉलेज गेन करबा पाई फ्रीडम प्रोवाइड करबा ये होची Rossonकर फिलोसफी दिस इज इन कंट्रास्ट टू द मॉडल ऑफ एजुकेशन वेयर द टीचर इज ए फिगर ऑफ अथॉरिटी द अथॉरिटी एठी नुहंती टीचर हु कन्वेज नॉलेज एंड स्किल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड करिकुलम तो एठी आगरो प्री डिटरमाइंड करिकुलम नाही जा हिसाब रे नॉलेज कन्वे करिवे टीचर स्टूडेंट को सो कौन से प्रकार करिकुलम को फॉलो करा जाए कौन से प्रकार नॉलेज दियंती टीचर बा अथॉरिटी फिगर नुहंती टीचर
Because of such continuous interaction, environment are created. These environments are the field in which situations and conditions interact with personal needs and purposes and create lifelong experience. Means once learning by doing ହେଇଛି ନିଜେ explore କରିଛି ନିଜେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ bitter taste ତାର bitter sides को भी सी देखी नेगेटिव एजुकेशन ताकू मिली से जितेबाला सी शिखुची इट विल बी लाइफ लॉन्ग एंड एवर लास्टिंग एजुकेशन. हिज फिलोसफी कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन, natural civilization. Natural state means that simply framing the community or framing community or state without evils, corruption, social classes जहाँ हम already कही सारी पुनी highlight कर दली. Natural man means man is governed and directed by laws of his own nature rather than those of the social instructions. The social instruction बा social law को follow करिबा, निजर law निजर nature अनुसार grow करिबा. Civilized man born lives and dies in state of slavery. जोटा आगरू कही छी Rosso man meddles with them and they become evil. Means Rosso कहले the creator of the nature made everything good. जो पॉइंट आमे हाईलाइट करते स्टार्टिंग रु जे कौन God makes all things good, mad meddles with them and they become evil. ये गोटे आ गोटे everything is good as it comes from the hands of the author of nature but everything degenerates in the hands of man. ये सब पॉइंट्स को इंपोर्टेंस दबा जिते आम लिखुचे रसंकर फिलोसफी. He believed that man would have been happier if he is allowed to remain in his natural state. Rosso has remarked that leave the child alone. से जिन को रिवाइज करूची. Let him a natural man rather than civilized man. Let him have a state of natural rather than an artificial surroundings that stunt the proper growth and arrest his natural development. The natural civilization is free from artificial surroundings and barriers that pollute the goodness of our nature. Return to nature was the method to cure all troubles. Aim of women education या ऊपर कौन कहते हैं women education ऊपर तो women education रो जो ideas देइथिले Rosso टिके gender bias थिला but still देखिवा कौन according to Rosso aims of education should make her perfect and efficient housewife. Curriculum. Rosso believed that literacy education does not suit for women. It was a negative point actually, drawback भी आमे कही परिबा रोसंकर फिलोसफी रो. He also stated that a woman of culture is the plug of her husband, her children, her family, her servants, everybody. He said that she should given moral education, religion education, domestic education and physical education. Okay, या एटा डेमोक्रेटिक एजुकेशन मध्य हो परिबो. एनीवे फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ Rosso जदि आसे ताले एई किछि पॉइंट्स को इंपोर्टेंस दबा. पेशेंस इज बिटर बट इट्स fruit is sweet. Child is slip of reason. Slaves lose everything in their chains, even the desire of escaping from them. The slaves को आ जाय छै मॉडर्न मैन को, राइट, सोशल मैन को जे सोसाइटी रे रहे और चेन रे चारियाडू बंधा हेकि थाए एवं से भूली जाए जे से फ्री क्रिएचर ऑफ द नेचर बोली एवं एस्केप करिवारो डिजायर मध्य ता भितरु पळि जाए. डू नॉट जज एंड यू विल नेवर बी मिस्टेकन. Gratitude is a duty which ought to be paid but which is a right to accept. Absolute silence leads to sadness. The world of reality has its limits. The world of imagination is boundless. The reality tar limit अछि किंतु imagination is boundless माने limitless. Man is born free and everywhere he is in shackles. It is in chains भी लिखि परिबा. It is very difficult to think nobly when one thinks only of earning a living. तो only earning living बंचिबा पाई जो जति जिनस दरकार हम रिक्वायरमेंट फुलफिल करिवार लागिबा ताले हमरो हैप्पी लाइफ हे परिबनी. द पर्सन हु हैज लिव्ड द मोस्ट इज नॉट द वन हु with the most years but the one with the richest experience. तो यही पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट. जो लोक को अधिका वर्ष पर्यंत बंची ताकू आमे कहिबानी जे कोन कहिबानी the person who has lived the most is not one with the most years. तो lived the most कहा को कहिबा जे अधिका वर्ष बंची ताकू नुहे जे अधिका क्वालिटी एक्सपीरियंसेस आनी ताकू जा लाइफ रे एक्सपीरियंस अच्छी सी लिव्ड द मोस्ट.
not that man who lived for more years. एज अधिका हेले रिच आमे मोस्ट माने बेस्ट लिविंग बोली कहबानी जे अधिका एक्सपीरियंसेस गेन करछि ताकू कहबा. तो ये थिला किछि इंपोर्टेंट पॉइंट 11 को जो देखिबा आई एम नॉट अमाउंट टू मच बट एटलीस्ट आई एम यूनिक. I hate books that teach us only a talk about what we do not know. Happiness, a good bank account, a good cook, a good digestion. तो सब जिन सही परिव happiness द्वारा. I may not be better than other people, but at least I am different. So these are the points जा ऊपर importance देथिले Rosso. And ये last एटी end करिवे मु limitations of Rosso educational philosophy रे. We have discussed the Rosso educational philosophy thoroughly and found the following limitations. Kona number 1 रे he had stressed negative education. माने ता हाथ तो जळी जाऊ तापर जे से सिखु. तो एटा उटा हमें नेगेटिव कहि परिबा जे ताको हमें आगरु गाइड करि परिबा. There was no higher place given to morality and ideas. कोई इंपोर्टेंस दिया जाइनी. He had no faith in the goodness and influence of the society. तो फेथ नथिला तांकर सोसाइटी इन्फ्लुएंस ऑफ गुडनेस ऊपर. ही हैड गिवन द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन दैट इज नेचुरल कन्सिक्वेंसेस बोली कहिथिले सब. ही हैड एक्सप्रेस्ड फॉल्टी व्यू कंसर्निंग वुमेन एजुकेशन जोटा मु सेते बेले कहि दैथिली दैट इज लिटरेरी एजुकेशन विल नॉट सूट वुमेन. ए जो पॉइंट टा कहिथिले इट वाज नॉट द राइट वन. सो ए सब लिमिटेशंस थिला रोसोंकर एजुकेशनल फिलोसफी. एटु हमें कंक्लूड करि परिबा आफ्टर द डीप स्टडी ऑफ रोसो एंड हिज फिलोसफी इट हैज फाउंड दैट ही वाज नेचुरलिस्ट. He believed that nature is supreme and there is nothing beyond and behind the nature. He believed in natural consequences. He believed in isolation of individual than society. He was totally against society. He had laid stress on negative education. He had no place for positive virtues. He believed free discipline, free personality and free education. He had not given the higher place to teacher. He was anti of physical punishment. So a conclusion point रे a breathing in general gist अच्छी पूरा रोसोंकर naturalist philosophy of education. Hope you understand. I am also teaching in Unacademy, India's largest learning platform. If you are interested to join, you can contact me. My number 8917214900. And friends, like, share, comment निश्चित करिवो. सब्सक्राइब करिवो जदि चैनल रे अछन नुवा सब इंपोर्टेंट वीडियोज OES एमएड बीएड पई जहां भी रिक्वायरमेंट रही ता पूरा करबा पई चेष्टा करूची. थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर. हैव ए ग्रेट डे. जय जगन्नाथ.